जाफराबाद नगरपालिका के प्री मानसून प्रदर्शन पर उठा सवाल। जाफराबाद नगरपालिका के कारण तुर्की मौला के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में अगर इस बदबूदार पानी और कीचड़ से बीमारी फैल गई तो कौन जिम्मेदार होगा। पुरानी अदालत के पीछे तुर्की मोहल्ला जाफराबाद का हुसैनी चौक गंदे कीचड़ और दुर्गंध युक्त सीवेज से भरा हुआ है। नगरपालिका को बार बार सूचित करने के बावजूद सिस्टम आंखें मूंद लेता है। यहाँ रहने वाले लोग साफ सफाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है। यदि अत्यधिक प्रदूषण के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ा और महामारी फैले तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र में सीवेज भरा है उस क्षेत्र का दौरा कर नियमित रूप से सफाई कराई जाए। वारंवार अमे फरियाद करी छे, आ गटर में कोई वरदीथी ध्यान आपतो नथी ने अमे वारंवार ओछामां ओछा 8 થી 9 વાર મકવાણા સાહેબને ફરિયાદ કરી છે, પણ સફાઈમાં કે ગટરમાં કે કોઈ વસ્તુમાં ધ્યાન દેતા નથી। આ હુસેની ચોકમાં સફાઈ થતી નથી। અમે વારંવાર ફરિયાદ કરી છે, એટલે મહેરબાની કરીને આ સફાઈનો મોહરમનો તહેવાર છે, એટલે સફાઈ તમે કાયદેસર કરાવો। મારું નામ અજીમભાઈ ભટ્ટી, જાફરાબાદ तुर्की મોહલ્લામાં રહેવાસી। આ હુસેની ચોકમાં ગાંધી ભવનના પાછળ 1 વર્ષથી અમને ગટરની તકલીફ છે, કોઈ જાતની સફાઈ થતી નથી। વારંવાર અમે ફરિયાદ કરીએ છીએ, કોઈ ફરિયાદ સાંભળતા નથી। આજે અમારું ધાર્મિક મોહરમનો તહેવાર છે, એમાં બી અમે રજૂઆત મકવાણા સાહેબને કરેલી છે, તોય કોઈ એની સુનાવણી થતી નથી। મારા રજા ઉપર છે, મારા નથી, બસ એક જ જુબાબ અમને આપે છે, ને કોઈ જાતની સફાઈ થતી નથી, કોઈ કામ ગટરનું થતું નથી, ને કોઈ જાતનું કામ થતું નથી। તો અમને સરકારશ્રીને માન્ય વિનંતી આપીએ છીએ કે અમારું આ કામ થાય। મોહરમનો તહેવાર છે, એના પહેલાં અમને ગટરનું સફાઈનું કામ અમારું થઈ જાય। हुसैनी चौक जाफराबाद तुर्की मोहल्ला। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।